Hello everyone, my name Kaushal Kumar. Today I discuss with Pharmaceutical Biotechnology Unit 1. First of all, discuss a introduction of biotechnology with reference to pharmaceutical science. The word biotechnology has been derived from two simple terms of science, that is biology and technology. That means कि बायोटेक्नोलॉजी जो दो वर्ड से मिलकर बनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी और दूसरा है टेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द बायोलॉजी, स्पेशली when used in microbiology, agriculture, food science and medicines. जो बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी का जो बेस्ड है वो क्या है, हमारा जीव विज्ञान है. स्पेशली वैन जब इसका यूज़ हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, फूड साइंस में और मेडिसिन्स में. बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन that uses biological system, living organism, cell tissues, explained or derivative thereof to make or modify product or process for specific use. जो बायोटेक्नोलॉजी है और इसका यूज़ हम जो करते हैं वो हम बायोलॉजिकल सिस्टम में करते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, हमारे प्लांट हैं और अदर डेरिवेटिव्स हैं. उसमें यूज़ करके क्या हम न्यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे स्पेसिफिक यूज़ के लिए होते हैं. एज पर अनदर डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी इज़ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल साइंस टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन. जो इसके दूसरी एक डेफिनेशन है वो ये है कि जो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, जो हमारी इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है उसको हम और बायोलॉजिकल साइंस को किसी भी न्यू प्रोडक्ट के बनाने में जो रॉ मटेरियल्स हम बनाते हैं वो क्या है, हमारा एज ए बायोटेक्नोलॉजी है. कोई भी हमारा रॉ मटेरियल है जो बायोलॉजिकल ओरिजिन से हमारा प्राप्त हुआ है, उस रॉ मटेरियल से हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के द्वारा और बायोलॉजिकल साइंस के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. ये हमारा इंट्रोडक्शन है. अब इसमें आता है जो कार्ल एक्रे, ही वाज डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जो कार्ल एक्रे थे ये क्या बायोटेक्नोलॉजी के फादर थे, फादर कहलाते हैं. तो ही वाज ए हंगेरियन agriculture engineer 1919. He published in Berlin a book called Biotechnology of Meat, Fat, Milk Production in an Agriculture Large Scale Form, where the described an agricultural technology based on converting raw material into a more useful product in order to cause a boom in agriculture production. Biotechnology derived from Greek word bio means life, technos means technology and logos means thinking. ठीक है. जो कार्ल एक्रे थे इन्होंने एक क्या था, एक बुक लिखी थी जिसे क्या नाम है, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मीट, फैट, मिल्क प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर लार्ज स्केल फॉर्म. ये इस बुक का नाम था. बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया गया था वो ग्रीक वर्ड है. बायो मीन्स लाइफ है, टेक्नोस मीन टेक्नोलॉजी एंड लॉगस मीन थिंकिंग. अब इसमें नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें देखिए सिस्टमेटिकली द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अप टू दिस इट्स करंट स्टेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टेज. इसको जो डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एसएन बायोटेक्नोलॉजी. इसके अंतर्गत क्या है, डोमेस्टिकेशन, फूड प्रिजर्वेशन, फर्मेंटेशन, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स ये आती हैं.
नेक्स्ट है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपके लॉ ऑफ इनहेरिएंस, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वैक्सीनेशन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन ये आता है। और नेक्स्ट लास्ट है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेशन डीएनए एक्सपेरिमेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जीन थेरेपी, क्लोनिंग इन एनिमल, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ CRISPR और लास्ट है ट्रांसफरिंग ऑफ मेमोरी। ये 3 हमारी बायोटेक्नोलॉजी हैं, एंसेंट, क्लासिकल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए एंसेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बिफोर द ईयर 1800 वर्ष पहले द फर्स्ट फेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड। The development and innovation were only to improve the surrounding environment for better living in all except such as shelter, food, health, and animal life. Domestication of food products such as agriculture understood the importance of water, light, other requirements for the optimal growth of food plant. Domestication of different wild animal and application of animal breeding, development of method for food preservation and storage, making of cheese and curd, bread, vinegar and other fermentation product like alcoholic beverage, whiskey, wine, beer, etc. Introduce cross breeding of animal produce mull. Now discuss classical biotechnology. It is second phase. It is called classical biotechnology. This phase existed from 18th century to almost the middle of the 20th century. Law of inheritance, transfer of genetic information found in Pisum sativum by George John Mendel. Theory of evolution resulted from a process called natural selection. Charles Darwin discovered nucleus in cells. Robert Brown. Nuclei consist of nucleic acid extracted from white blood cell. Friedrich Mischer coined the chromosome. Heinrich Wilhelm vaccination against smallpox and rabies. Edward Jenner and Louis Pasteur. First experimental corn hybrid was produced in lab. William James Wheel. First cancer causing virus papilloma, Ross sarcoma virus discovered by Peyton Ross. The theory of gene, T. H. Morgan coined the term genotype and phenotype. Wilhelm Janssen, discovery of first antibiotic from Penicillium notatum. Alexander Fleming. These scientists discovered in the 18th century. This period called is classical biotechnology. Now discuss modern biotechnology. After the Second World War, some very crucial discoveries were reported which paved the path of modern biotechnology. First of all, double helix DNA was explained. J.D. Watson and F.H.C. Crick, 1953. First application of cell culture.
monkey kidney cells technology to generate first polio vaccine, Dr. Jonas Salk, 1955. The first synthetic antibiotic, Nystatin, Rachel Fuller and E. L. Hagen, 1957. First DNA made in test tube, Kornberg. Recombination DNA experiment was performed using bacterial gene. The concept of cytoplasmic hybridization and produced the first ever monoclonal antibodies, Kohlher and mystine. The first ever organism bacteriophage genome was sequenced. Frederick Sanger, the first transgenic animal developed by transferring gene from other animal into mice. Scientists at Ohio University, 1981. The polymerase chain reaction was invented by Carey Mullis, 1983. The first successful gene therapy is performed on a 4-year-old girl from an immune disorder, 1990. The first animal clone from the adult cell is sheep named Dolly, Kath Campbell and Ian Wilmot, 1996. The first human artificial chromosome was created in 1997. Human skin was produced for the first time in the lab, 1998. The Benteng and Adengrid species was cloned for the first time, 2002. The Human Genome Project completed the sequencing of the human genome, 2003. The artist Stilark had an ear grown in a vat and grafted on to his arm, 2006. Trachea derived from the stem cell transplanted into human recipient, 2011. There was a third genetic storing molecule, XNA, synthetic polymer developed by Vitor Pinheiro and Philip Holliger, 2012. The first synthetic antibiotic, Nystatin, was developed. Rachel Fuller Brown and E. L. Hagen, 1957. The first time DNA was made in a test tube, Kornberg, 1958. The concept of operation was given by Jacob and Monod, 1961. The first recombination DNA experiment was performed using bacterial genes, Kohn and Boyer, 1973. The concept of cytoplasmic hybridization and produced the first ever monoclonal antibodies, Kohlher and Milstein. The major field of biotechnology and scope of biotechnology. It is a broad discipline in which biological process, organisms, cell or cellular component are complex to develop new technologies. Biotechnologies are being used in countless areas including agriculture, clinical and therapeutic industries, bioremediation and forensic. Different color in rainbow are used to describe very wide and well developed range of biotechnology activities is called Rainbow Code of Biotechnology. Rainbow Code of Biotechnology: green color, the development of agriculture; yellow color, nutritional biotechnology; red color, devoted to medicine and human health; white color, industrial biotechnology; gray color, devoted to problem of environmental protection; blue color, biotechnology of marine; brown color, biotechnology of desert and dry region; the gold color, bioinformatics, computer science and chip technology; violet color, this deal with law, ethical and philosophic issues; and dark color, bioterrorism and biological weapons. Thank you.